डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद भाई। बहुत स्वागत है आपका सबका आज के हमारे इंस्टाग्राम लाइव में। आज मेरे साथ है मेजर समर तूर सर। समर तूर सर के साथ हम लाइव हैं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि इस सेशन को भैया प्लीज़ शेयर कर दो, सब लोग शेयर कर दो। बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन होने वाला है, बहुत ही मज़ा आने वाला है भाई सबको। जानने को मिली, शायद हो सकता है किसी भी टेलीविजन चैनल पे या किसी भी उसमें आपको ना मिले। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू शेयर दिस सेशन टू एज मैनी पीपल एज यू कैन। मेजर समर तूर सर जो यूएन में सर्व कर चुके हैं एज ए यूएन पीस कीपर विल बी लाइव विद मी। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू शेयर द सेशन। तो यही मैं बोलना चाहूंगा आप सबको कि इस सेशन को शेयर कर दो। आई एम नाउ लाइव विद मेजर समर तूर सर। समर तूर सर अभी ज्वाइन कर लेंगे तो तुम्हें पता लगेगा कि व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी दैट इज बीइंग हैपेंड इन द यूक्रेन। यूक्रेन में क्या ग्राउंड रियलिटी भाई चल रही है, क्या एरिया ऐसा है जो ट्रबल्ड है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं यूक्रेन के अंदर। ठीक है, तो वो देखना एक बार। और मैं आपको बता देता हूँ सबको, एक सेकंड दे दीजिए बस। जय हिंद सबको। बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये सेशन आप शेयर कर दो सबके साथ। समर तूर सर आने वाले हैं। मेजर समर तूर सर विल बी लाइव विद मी। मैं उनको ऐड कर ले रहा हूं। सर को मैंने रिक्वेस्ट भेज दी है एंड सर लाइव आ चुके हैं। जय हिंद सर, गुड इवनिंग सर। Hi, Shiv. How are you? यस सर। सर कैसे हो आप? मैं थका हुआ हूँ। हाँ सर, मैं समझ सकता हूँ। मतलब आपको कॉल्स आ रहे हैं, एसओएस कॉल्स आ रहे हैं हर जगह से। मतलब जो हमारे स्टूडेंट्स जो यूक्रेन में आसपास के कंट्रीज में फंसे हुए हैं एंड उसकी आप बड़ी मदद कर रहे हो। तो मैं उसी इशू के बारे में आज बात करना चाहूंगा। हेलो आर्यन। सब बच्चों को भाई जय हिंद। स्वागत है आपका लाइव सेशन में। मैं चाहूंगा आप इसको शेयर कर दो ताकि हमको पता लगे कि हमारे समर सर जो हैं कितने बिजी हो रखे हैं आजकल। और सर मैप भी शो कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ से बच्चों को वो मतलब रेस्क्यू कॉल्स उनको आ रहे हैं और कैसे वो मदद कर रहे हैं। मतलब रियली हैट्स ऑफ टू यू सर फॉर दिस एफर्ट सर। थैंक यू सो मच। मतलब आप इतना कर रहे हो बच्चों के लिए सर, उसके लिए आई एम रियली रियली प्राउड ऑफ एज अ ब्रदर। एंड सर जानेंगे उस चीज के बारे में आपसे कि मतलब क्या चल रहा है, ग्राउंड रियलिटी क्या है सर। तो सर मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि मतलब व्हाट इज हैपनिंग एक्चुअली और उसमें क्या चल क्या रहा है अभी सर। थोड़ा सा उस बारे में आप कुछ बता सकते हैं तो। यार अभी सिचुएशन ये है शिवम दैट ईस्टर्न फ्रंट पे जो डोनियस्क वाला रीजन है, बेसिकली यस सर। डोनियस्क एंड लुहांस्क, वो राइट साइड पे जो दोनों उनकी जो थी स्टेट्स, उनको इन्होंने पहले तो ओवरथ्रो करके रशिया ने ले लिया था, क्योंकि यहाँ रेफरेंडम वोटिंग हुई थी कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो, तो इन्होंने खुद ही बोल दिया था भाई हम रशिया के साथ रहना चाहते हैं। यस सर। आफ्टर दैट यूक्रेन हैड टू गिव अप ऑन दीज टू प्लेसेस। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, दीज टू आर द बॉम्बे बॉम्बे ऑफ रशिया, अच्छा। इंडस्ट्रियल हब। यहाँ पे स्टील बनता है, ठीक है। स्टील के अलावा इनके पास माइनिंग बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे, ठीक है। इंडस्ट्रियल हब है, माइनिंग है, कोल के रिजर्व है, स्टील है, ठीक है। एंड अभी तक 2014 से लेके अभी तक अराउंड 14,000 पीपल हैव बीन डेड इन डोनियस्क एंड लुहांस्क। तो प्रॉपर जैसे इंसर्जेंसी टाइप माहौल है वहां पे बाय द यूक्रेनियंस, एंड रशियन आर्मी वाज अवॉइडिंग टू गो इन। तो उन्होंने मिलिशियाज, तो यूक्रेन कहते हैं, अभी वहाँ के जो लोकल्स हैं या उनके रिटायर्ड आर्मी वालों को उन्होंने पैसे देके दे हैड हायर्ड देम
भाई you take care and protect Luhansk and Donetsk. तो after a lot of barbaric killings, मैं videos भी हैं मेरे पास जो मेरे हाथ लगी हैं, तो lot of barbaric killings of Russian soldiers के बाद then Russia got fed up, फिर ये बात करने लगे कि हम NATO भी ज्वाइन करेंगे. And 1988 में there was agreement that ऐसा ये कुछ नहीं ज्वाइन करने वाले the European countries, but they did. So basically it's an indirect form of Cuban Missile Crisis. Joining NATO is like inviting American arms and ammunition into your country. So that is what has happened here. So now Russia has lost the initiative, and basically they are going to come face to face, and Poland has already given authorization for using its airfield for its air force, Ukrainian air force, because they bombed Ukrainian airfield. So if this is to happen, then probably war will spread into the deeper far end of Europe. Okay. And currently, let's talk something positive also. We have been able to evacuate currently at this very moment 300 to 400 students from Kharkiv are at the railway station right now. As we talk, they are proceeding to Moldova. Moldova में मैंने उनका arrangements करके रखा है. And I have also spoken to my UN colleagues who are of Ukrainian origin. So they have already organized their receiving them, organizing the paperwork and everything. It will be wrong on our part to say government is not doing anything, because basically government को कोई approach ही नहीं कर रहा है, ना कोई entertain कर रहा है. So whatever I have been able to do is I've been managing it. But in the media, definitely it's coming out that the government is reaching out, though it is reaching out, but not on that scale. The problem is that Indian embassy in Kyiv has just one or two phone numbers. तो दो फोन नंबर को हजारों लोग कांटेक्ट करने के चक्कर में है, तो दैट इज समथिंग लाइक अ इम्पॉसिबिलिटी. सॉरी मैं रात सो नहीं पा रहा हूँ, so I am mentally very exhausted. As I am doing the live session, I am very anxiety prone because background में I am sure किसी ना किसी का मैसेज या कुछ आ रहा होगा, but still it's fine. I am sure they are also watching. And the best part is यूक्रेन में इंटरनेट कनेक्टिविटी रहेगी because Starlink का एक्सेस मिल गया है उनको, जो एलन मस्क वाला है. हाँ, Elon Musk has already sent the equipment and Starlink is already active. तो उन्हें uninterrupted internet speed मिलेगी. As a result, it will keep a check on war crimes, क्योंकि you know everything is going to be visible and covered by the media. So it's a new form of warfare, new technology. तो मतलब सर ये तो एक अलग ही लेवल पे वॉर हो रहा है. मतलब इट वाज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टेड कि यार ऐसा कुछ हो सकता है, और रसिया एकदम सडनली मतलब अटैक कर देगा. एकदम सडनली नहीं हुआ, पहले भी कोशिश करी गई है, और उनको देख के चाइना भी थोड़ा सा एक्टिव हो गया, हाइपर एक्टिव हो गया है. उसने वियतनाम की तरफ वो कर दिया, थोड़ा सा उन्होंने उधर भी चपेटे में ले लिया उसको भी इसके सहारे. I'll tell you, this war, I would like to just tell you that, see, for past 8 or 9 years, you know, Russia had been telling that don't join NATO, don't do it. And Americans are the ones to blame. And, you know, Americans were the main reason for, I think, all the troubles, because this is one democracy in the world which has taken the ultimate disadvantage of being a world power. You know, right? Let me just make you count. You know, it started from Vietnam, then it came down to South Korea and North Korean war. Usme bhi America was involved. It nuked Japan. फिर सीरिया में वॉर हुआ, लीबिया में हुआ, लेबनान में हुआ, इराक में हुआ, पनामा में हुआ, अफगानिस्तान में हुआ. I mean, no other democracy took it as their job of fighting so many wars other than Americans.
अब I fail to understand कि what threat Panama was to the world and Iraq, the total data given weapons of mass destruction, there was no proof. Colin Powell, the Secretary of State, had all that made up from the CIA. It was a bluff. Yes, sir. So that we can imagine that because after the Iraq war, the fuel prices have never gone down now. 2003 या 4 में I think 2002, 2001, petrol used to be 43 rupees or 40 rupees a liter. And I don't think after 2001 and 2002 the prices have ever come down here. Yes, sir. बढ़ाई है तब से. And maximum majority of the countries with which US is doing business are all oil-based companies there. So basically, it has already collected all the raw material and resources. It's a one full continent. USA, if you see it as a whole country, वो तो एक continent के बराबर है. Yes, sir. And I feel that the pressure on our land mass is so much. But you know, ठीक है, let's go. But the world order has been disturbed by this war. That is for sure. And coming few months will be deciding many things. Taiwan's fate is in the balance. Maybe it is decided within few days, maybe weeks. But Taiwan is definitely, you will be seeing it happen very soon. I should not be saying it, but these are the hard realities of life. You got to live with it. Yes, China will go ahead and will take Taiwan as well. But then people ask me a question, Shivam, उनकी हेल्प के लिए क्यों कोई नहीं आता है? So just take an example, you know, Ukraine was never helpful to India no matter what. Yes, sir. I have seen it. It has never ever been helpful to us. Whereas we never did anything bad to anybody. Despite people not being supportive to us after the nuclear test and we became a nuclear power, people did not support us, but we never damaged the relations by reciprocating in a negative manner. हमने तो सभी के साथ relationship improve करने की कोशिश किया है. Yes, sir. But you know, and now what I'm getting the reports is they are using Indians as human shields. Can you imagine? The Ukrainian hardliners, जो neo-Nazi हैं, they are literally not allowing the Indian students to go. They're saying, if you leave without permission, your degree will be written off and everything. And बच्चों ने 4-4, 5-5 साल की पढ़ाई कर चुके हैं. I feel bad for those students who are in the last year or in the second last year. 6 साल का होता है MBBS वहाँ पे. So where will the poor, you know, senior students go? Yeah, they have no place to go. And as far as whoever is watching, if you know anybody in Ukraine, especially in the places like Chernihiv, Sumy, or Kharkiv, please let me know by all means possible. Oblique, even at places like Odessa or Kherson. मुझे बताना अगर कुछ भी है. I'm in touch with the embassy in Romania. I'm contacting people. I'm making WhatsApp groups because एक ही group में बहुत सारे वहाँ पे students आ जाते हैं 200 के आसपास. So it becomes easy for me to communicate the addresses and vital places and important people whom to meet up and how to plan things. Definitely. तो मैं जो भी व्यूअर्स हैं सर के बिहाफ पे मैं I'll reiterate it कि सर SOS कॉल सर को आ रहे हैं एंड सर अपने रेफरेंसेस के थ्रू अपने जो भी लिंक्स हैं या जो भी सर के जो फ्रेंड्स हैं वहां पे उनके थ्रू सर इज अरेंजिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक बेसिकली कि आपको कहीं भी मदद चाहिए तो सर पूरा का पूरा उस पे वॉच कर रहे हैं एंड ही इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी रिसोर्सेज टू द पीपल, है ना. क्योंकि अब ऐसे एक इमीडिएट सिचुएशन हो गई है जहां पे गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी सर्टेन लेवल तक.
तो वहां पे ग्राउंड में जाना पड़ेगा, एंड फॉर द ग्राउंड थिंग्स टू हैपन यू नीड समवन हु कैन लाइक हु हैव बीन देयर, डन दैट, एंड आई थिंक सर इज द राइट पर्सन। सर यूएन में सर्व कर चुके हैं, सर का ग्राउंड पे काफी सारे बंदे हैं जो हेल्प कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप रीच आउट करना, मेरे से भी रीच आउट कर सकते हो अगर किसी के कोई रिलेटिव फंसे हैं या कोई फ्रेंड्स फंसे हैं यूक्रेन में या आसपास के कंट्रीज में, एंड देन वी कैन हेल्प देम रीच टू द सेफर प्लेसेस, ताकि वो देश वापस आ पाए। यस सर। तो सर एक चीज और आती है कि जैसे यूएन है सर, जैसे अभी था यूक्रेन के सपोर्ट में, ये लोग, अमेरिका चाहता है कि ये नाटो का मेंबर बन जाए, पर नाटो का मेंबर बनने के बाद सर अमेरिका के पास मेजरली कंट्रोल चला जाएगा, जैसे आपने बोला कि वेपन्स विल स्टार्ट टू अराइव इन Yes, यू। weapons are already there, but immediate तो will be a issue ना. If Pakistan says कि भाई it is, if like only China was a threat, Pakistan, we were in good terms with Pakistan, for example, बोल रहा हूँ, hypothetically. यस सर। And Pakistan decided नहीं यार, we will side with China and we will do what they say. हम पे प्रेशर और आ जाएगा यार. So that is the exact situation. पहले रशिया लेके गया था क्यूबा में मिसाइल्स, क्यूबन्स को देने के लिए, भाई ये लो हमला करना, एंड बेसिकली दैट वाज जस्ट मतलब बहाना. अब तुम लोग मतलब ऑल यू स्टूडेंट्स वेर एवर यू आर स्टेइंग, आपके नेबर के घर में कोई अनवांटेड या रूड बंदा आके रहने लग जाए, आपके नेबर्स को कुछ गलत उठपटांग सिखाने लग जाए या शोर शराबा शुरू हो जाए, वुड यू लाइक इट? योर फुल एनवायरनमेंट और माहौल खराब हो जाएगा. बिल्कुल सर. So that is exactly what US is doing by pressing on to the neighboring countries of Russia to join NATO. So Ukraine has become a balika bakra, a scapegoat for the power struggle and power shift between the West and Russia. Okay, somebody written, why was NATO created? Basically, NATO was formed, North Atlantic Treaty Organization. It is a tool which is there, which was made into existence to counter the Cuban Missile Crisis. उधर बता दिया गया था कि okay, if you are going to provide South American countries with your weapons and your troops stationed there, तो भाई हम नेटो बना लेते हैं, you act funny, we will also send our troops there. पर अब इतना हो गया that America has overwhelmingly, pushed all these countries to be a part of NATO. And abhi Sweden is not a part of NATO. Sweden and एक और country है, there are two countries which are not a part of NATO so far. But वो भी बन जाएंगी, the way how the threat is looming. Because European countries are very small, they can't afford. एक तो उनके पास लैंड मास बड़ी लिमिटेड है, पॉपुलेशन भी बहुत कम है, and they never मतलब felt the requirement of a large army, of having so many F-16s or different kind of aircrafts, Mirages and Jaguars or something like that, Gripen or the Typhoon Eurofighters. They can't afford all that. So in सब इकट्ठे होके European countries said, okay, let's get together and we'll form a proper common force जिसमें हम सब अपने अपने ट्रूप्स को कंट्रीब्यूट करके इकट्ठा करेंगे. तो किसी भी यूरोपियन कंट्री को रशिया से, रशिया वाज अ कम्युनिस्ट, तो रशिया वाज ऑलवेज अ थ्रेट, तो रशिया से कोई प्रॉब्लम आई तो वी विल काउंटर अटैक. तो ये था बेसिकली नेटो के बारे में बच्चों. तो सर ने बताया कि नेटो जो है यूरोपियन कंट्रीज का समूह है जिसमें सब अपने ट्रूप्स कंट्रीब्यूट करते हैं, एयरक्राफ्ट्स को, जो भी उनके हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स, सबका कंट्रीब्यूशन रहता है ताकि वो बड़ी सुपर पावर्स लाइक रसिया वगैरह से काउंटर कर सके. अच्छा सर, एक बच्चे ने पूछा कि जो बिडेन जो है, इज ही अ वीक लीडर, मतलब इनका अमेरिका वालों का रोल क्या है, मतलब
ये हमेशा भड़काऊ रोल ही प्ले करते रहे हैं अभी तक, बट व्हेन द टाइम कम्स दे रेन अवे. See, uh, we can't say. See, Joe Biden. Basically, the American foundation shook when the public had stormed their Capitol State building. जो उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल बिल्डिंग थी व्हेन ट्रम्प वाज मतलब लूजिंग द इलेक्शन एंड वोट काउंट चल रहा था, दे स्टॉर्म द कैपिटल बिल्डिंग. सो बेसिकली दे वांटेड टू मेंटेन द व्हाइट सुप्रीमेसी. And whereas Joe Biden is a very mixed cultured guy, and he firstly stopped the Mexican wall, which was funded by the taxpayer of America, which Donald Trump had started. फिर उसके हेल्थ केयर, बराक ओबामा का हेल्थ केयर इसने काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाती थी ट्रम्प ने. So by the time Joe Biden came into power, he had nothing that Trump could offer as a constructive thing to him. So Joe Biden took a constructive call by saying that आधा तो ट्रम्प ने डुबाई दिया है monetarily, financially, so it is better that I get my army back, because to maintain any military force, it costs money, and time also costs money. So it's not a very easy objective, to support an army on foreign land. So as a result, they pulled back the American forces from Afghanistan, which gave a notion to the world that America has become weak. Like they moved out from Iraq, but they installed a democratic government. They ensured voting, they ensured the administration structure, everything, all the government structures were in place and working. So they left it in a functional condition, but Afghanistan they left in a very dysfunctional condition. Yes sir. और सर एक चीज और आती है, जैसे मतलब व्हाट डू यू थिंक कि इसका मतलब आउटकम क्या निकलने वाला है? अब ये वॉर सर चालू हो चुका है, इतने सारे जाने जा रही हैं. अभी जैसे मैं कुछ समय पहले आई जस्ट सॉ कि 4,000 से ज्यादा ट्रूप्स, रशियन ट्रूप्स की डेथ हो गई है. पर हो सकता है ग्राउंड रियलिटी ज्यादा ही खराब हो, सिचुएशन कुछ ज्यादा ही बुरी हो वहां पे. तो गो अहेड कंप्लीट योर क्वेश्चन. यस सर. पर मतलब क्या होगा इसका, मतलब डायरेक्शन क्या होगा, मतलब क्या आउटकम निकलने वाला है इसके बाद? मतलब क्या रसिया कैप्चर कर लेगा यूक्रेन को? अगर कैप्चर कर लेगा, पूरी तरीके से टेक ओवर कर लेगा, तो उसके बाद क्या होगा यूक्रेन के साथ? और बाकी फिर इन लोगों का क्या रिएक्शन रहेगा, ये जो दूसरे कंट्रीज हैं जो अपोज कर रहे हैं? क्योंकि रसिया से भिड़ना डायरेक्टली तो सर किसी के बस की बात है नहीं. क्योंकि रसिया, अभी पुतिन का स्टेटमेंट आया था, प्रेसिडेंट पुतिन का, उन्होंने बोला था कि हम जो कर रहे हैं, जो भी अगर आपने हमारे नागरिकों के खिलाफ कुछ भी एक्शन लिया तो उसको कंसिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे. उन्होंने बहुत ही क्लियर कट बोल दिया था. तो वेयर वी आर हेडिंग सर? वी आर हेडिंग टुवर्ड्स प्रोग्रेस, इंडिया एटलीस्ट. अब आप पूछोगे यार सवाल कुछ किया, जवाब ऐसा दे दिया, illogical लगता है ना. I will tell you why. Firstly, we are a country with a non-allied movement. Quad lost its relevance after Trump was voted out of power. तो ट्रम्प का इतना वो इम्पैक्ट नहीं रहा. With Joe Biden, it doesn't hold much weight. India is keeping quiet because China is a communist country, and we should never forget Russia also has its roots as a communist country. That is why there were red flags when the tanks were moving into Ukraine. So आइडियोलॉजी आप चेंज नहीं कर सकते, कपड़े और सब कुछ चेंज कर सकते हो, पहनावा चेंज कर सकते हो, डिसीव और डिसेप्शन कर सकते हो, बट आइडियोलॉजी कैसे चेंज करोगे? यस सर. So bad habits die hard. So for them, communism is what they eat, breathe, sleep, repeat communism. So as a result, despite so many sanctions on them, they having the trademark of being a communist country, the country was able to pull through. They were able to manage. So as a result, these sanctions don't have much relevance. And अब क्या होगा? There will be sanctions on Russia. Russia will increase its trade with India because we are neutral.
and with China, and whatever they give us, we are going to get it out into the market and sell it further and give the money back to Russia and keep our bit, whatever portion that we are going to earn out of that business. So that is one point of way that I see it. ओके। तो सर जैसे कि हमारा लाइक व्यू पॉइंट इस पे न्यूट्रल ही है, जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि हमें ना तो पॉजिटिव में जाना ना हमें इनके फेवर में जाना, हम न्यूट्रल रहेंगे। तो जहां तक है मुझे जहां से लगता है, जैसे आपने भी बताया कि इट इज गोइंग टू बेनिफिट अ लॉट, मतलब हमारे फेवर में रहेगी सिचुएशन। अच्छा सर एक चीज और आती है, जैसे आज के सेशन का मेन टॉपिक मैंने वही रखा था कि इसमें यूएन का रोल कहाँ रहा। एक बड़े मीम्स चले हैं सर कि यूएन है, यूक्रेन है, इधर यूएन है, इधर यूएसए है, और यूक्रेन बीच में खड़ा है और पीछे कहीं यूएन दिख रहा है और आगे रसिया उनको फायर कर रहा है और वो भाग गए। तो मतलब सर यूएन में तो आपने खुद सर्व किया है, तो यूएन का जो रोल है इसमें क्या रोल रहा है सर यूएन वालों का सर इसके अंदर? Yeah, UN का role will now start actually. UN's role will begin when refugees का influx शुरू होगा. And after the Russian forces come and settle down and take over, that is when UN will move in. It will take account of whatever damages and whatever has happened. Then there will be negotiations through UN, whether you want to install your मतलब किसे कौन गवर्नमेंट खड़ी करेगा, how are you going to go about it. So that is how the negotiations will happen. UN will be a important monitoring body for all humanitarian assistance, right from food to human rights to war crimes. ये सारी चीजें monitor होंगी. There will be a check on everything. So nobody is going to be basically there. UN does not let any country be lawless. यस सर। तो यूएन का काफी अहम रोल रहने वाला है जैसे सर ने बोला। और सर एक चीज और आती है, बेसिकली आपको क्या लगता है कि मतलब जो रसिया का ये जो मूव है, उन्होंने यूक्रेन पे हमला कर दिया, तो भविष्य में मतलब हमें क्या सीखना चाहिए, मतलब इस होल इंसिडेंट से हमें क्या सीखना क्या चाहिए, जो यूक्रेन और रसिया का जो वॉर चल रहा है, एंड ये जो नए बच्चे एस्पिरेंट्स हैं, क्या क्वालिटीज इनके अंदर, मतलब क्या सीखें इस इशू से, क्या सीखना चाहिए इनको, मतलब मेन मुद्दा वही है। Here, what I would like to tell the children is first get into the history, yaar. And ये तो see, Ukraine का trade has gone down in billions of dollars. मेरे पास statistics थे from 120 billion cubic meters of gas. ठीक है, from 2001 it has come down to just 41 billion cubic meter square in 2021. The natural gas transit जो pipeline है. Yes sir. So Ukraine was minting money only by allowing Russia कि हाँ भाई आप अपनी गैस की पाइपलाइन यहाँ बिछा सकते हो. Which Germany has, Germany said ना ये है कौन सा पाइपलाइन है, Nord Stream. NORD, Nord Stream is a project which is of a natural gas pipeline which goes through Germany, bypassing Ukraine. So Ukraine lost out on that. फिर टर्की में भी जाता है टर्क स्ट्रीम, तो टर्की का भी ये इतना बिजनेस हो गया. सो यूक्रेन लॉस्ट इट्स इंपॉर्टेंस एंड रेलेवेंस. ऊपर से जो इनका वो था फैक्ट्री फॉर मेकिंग मनी, डोनियस्क एंड लुहांस्क, वो तो उन्होंने वैसे ही ले लिया. द माइनिंग एंड स्टील एंड कोल इंडस्ट्री, ठीक है, वो वैसे ही छीन ली उन्होंने. ऊपर से अब जो साउथ में क्रेमिया था, क्रेमिया दे टुक बिकॉज ऑफ टैक्टिकल इंपॉर्टेंस टू डोमिनेट द ब्लैक सी. यस सर. तो ये सारी चीजें हैं, मतलब सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग ना एट वन टाइम. सो लेट्स सी, बट Ukraine has lost a lot, more than what it could imagine. एग्जैक्टली सर. सर एक चीज और आ रही है, जैसे ये फाइनल क्वेश्चन रहेगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा. आप काफी यू आर साउंडिंग वेरी टायर्ड बिकॉज आप मतलब एक्टिव हो, और मैं समझ पा रहा हूँ सर आपकी सिचुएशन. बीइंग अ ब्रदर आई कैन टोटली अंडरस्टैंड योर सिचुएशन. अभी व्हाट I'm going to sleep. अभी सो जाऊंगा,
for 3-4 hours. I'll get up at 12:30 until 4 in the morning. I'll be guiding them, talking to them. जो भी पैनिक में होगा, I'll be consoling them. I'll be giving them the addresses of the embassies, embassy officials. So और जो फंस चुके हैं उनके ज्यादा कॉल आ रहे हैं. So I've been telling sir. them that यार during war, you know, if you would have seen India Today का news today, मेरा जो live telecast आया था आज, I was telling Yes, them sir. exactly जो war scenario में होता है. Food, water, clothing, mobile phones, power banks, ठीक है, money is very important. फिर तो आपके important belongings जिसके लिए आप ट्रेड कर सकते हो. जान प्यारी है या सोने की अंगूठी, बंदे को दे दो यार सोने की अंगूठी, बोलो यार मुझे बस वेस्टर्न बॉर्डर यूक्रेन पे बस छोड़ दो. टेक दिस गोल्ड रिंग, आई डोंट वांट इट, मेरी जान बचा लो भाई. मतलब मैंने देखा स्टूडेंट्स लिटरली टिपिकल वो इंडियन मेंटालिटी, 2-2 बैग लेके. मैंने कहा भाई कहाँ जाना है 2-2 बैग लेके, लड़ाई लगी हुई है. मैं कहा प्लीज ड्रॉप योर डेड लगेज. लोग अपनी बेडिंग पैक करके लेके जा रहे हैं लड़ाई के टाइम. मैं कहा कहाँ बिस्तरा लगाओगे. मैं कहा स्लीपिंग बैग ले जाओ यार, या 2-3 जैकेट्स ले जाओ, जीन्स पैंट ले जाओ. अवॉइड वेयरिंग स्लीपर्स और फ्लोटर्स. जूते पहनो प्रॉपर, वार्म जुराबे रखो. माइनस में टेम्परेचर जा रहा है. केटर फॉर द इमरजेंसी एट नाइट. अगर शेल्टर नहीं मिला तो कहाँ सोओगे. मैं कहा 2-2 लोग एक बैग को लेके चलो. दैट इज व्हाट दे फॉलोड देम. वो लगेज कम हुआ तो ज्यादा स्टूडेंट्स आ गए उस बसों में. Yes, sir, एक exactly. बस में 45 से 50 आने, उसमें 70 आ गए हैं. 20 to 25 स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा बसों में भर के लेके जा रहे हैं. हाँ सर, अभी पैनिक सिचुएशन है और ज्यादा से ज्यादा लोग सेफली रीच आउट करें तो वो बेहतर होगा. और मैं भी उम्मीद करूंगा कि हमारे जो सिटीजन है, जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो फॉरेन सॉइल्स पे फंसे हैं, सेफली घर आ जाएं. सबके माँ बाप चिंता कर रहे हैं, सबके रिलेटिव्स चिंता में हैं. एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू समर सर कि समर सर इतने ज्यादा हाइपर एक्टिव हुए हैं. समर सर की जो स्टोरीज हैं मैं लगा दूंगा, स्टोरी पे लगा दूंगा. जो सर लाइव जा रहे हैं, सर अभी दोपहर में एक अमेरिकन चैनल के साथ भी लाइव थे और हमारे साथ भी सर लाइव आते रहते हैं. इंडिया टुडे ग्रुप के साथ भी सर लाइव थे. तो पूरा अपडेट है. सिचुएशन इज बेसिकली पूरी ट्रैक पे चल रही है और हम लोग उसको मॉनिटर. द सिचुएशन इज सो फ्रेजाइल. I myself cannot take sides, but I can tell you one thing, that Russian forces are not a threat to the Indians. And जहाँ पे भी Indian flag है, Russians are bypassing that building with the Indian flag. वो अंदर जाके देख भी नहीं रहे हैं क्या है. So indirectly, what the other people are doing, I don't want to name people, they are using Indians in an indirect way as human shield. By blackmailing them कि भाई तुम्हारी एडमिशन नहीं रहेगी, if you leave you will lose your admission, you will not be promoted, your exams will not be done, you have to attend online class. भाई वॉर लगी है यार. You think during war बड़ी there is going to be a class on dissection कि बॉडी का चेस्ट कैविटी कैसे खोलना है, सर कैसे खोलते हैं, कैसे ऑपरेट करते हैं, हार्ट लंग लीवर के बारे में कोई कौन पढ़ेगा उस टाइम. Nobody is going to do it because nobody has the availability of internet at all times there. वो तो saving grace है कि Elon Musk ने इंटरनेट भेज दिया, वरना the amount of war crimes would have been no man's business. Number 1. Number 2, vital targets like bridges have been blown off. Thankfully train नहीं उड़ाई है इन्होंने, train tracks, but they have blown all the bridges in and outside the cities now. तो जो भी 64 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है ना आउटसाइड की है, वो आगे ब्रिज है जो उड़ा चुके हैं. वरना 64 किलोमीटर लंबी लाइन, और गलती से भी एक भी यूक्रेनियन एयरक्राफ्ट आ गया या एम्बुश हो गया उस कॉन्वॉय के बीच में, इतना हड़कम मचेगा ना, इट विल बी ऑल आउट मैसेकर. मतलब आई डोंट थिंक यूक्रेनियंस इवन हैव टू टेक एम टू sabotage and ambush and kill the Russian troops. तो 64 किलोमीटर लंबी लाइन itself says firstly कि यूक्रेनियंस हैव लॉस्ट द इनिशिएटिव ऑफ एयर पावर, क्योंकि 64 किलोमीटर लंबी कॉन्वॉय लाइन खड़ी है और काफी घंटों से खड़ी है और कुछ हुआ नहीं है उसको. डेफिनेटली मींस
that either they are lacking intelligence, the Ukrainians, or they don't have any aircraft in the sky anymore. And मतलब पूरा ही तबाह हो चुका है. it's a hybrid warfare. Ukrainians are pushing the Russians back with the Bayraktar TB2 drone that they purchased from क्या कहते हैं टर्की. तो पहले टर्की एंड रशिया के पहली स्ट्रेन्ड रिलेशन थे, बट नाउ यू सी Turkey has sold these drones to Ukraine, and Turkey also navigates through one important river, which is the Dnieper River. ठीक है, there's a Dnieper River which flows from the Russian mountains. ठीक है, so वहां पे Turkey has already said that they are not going to let Russians navigate into the Black Sea. अब अगर Turkey takes this decision, there will be a spread of war definitely. देखो उनके रिलेशन तो खराब हो गए हैं. They have already sold these Bayraktar drones, and जितने भी casualties हो रही हैं maximum Russians की at this moment is because of these drones. They are not detectable, they are too small. ठीक है, गिनती के कुछ उनके मिसाइल एयर डिफेंस ने गिराए हैं. Otherwise, 99% of these Bayraktar drones have ambushed majority of the Russian convoys, खासकर armored tanks. क्योंकि ड्रोन इतनी हाइट पे उड़ता है कि टैंक का टर्रेट ऊपर हो ही नहीं सकता, तो टॉप अटैक से ही they have been attacking all the tanks and heavy armor. And there are so many aspects. Ukraine provides T-80 UD tank to Pakistan, one of the main tanks. ठीक है ना, T-90 T-80 Mark 2000 करके अपग्रेडेड वर्जन है that they are going to provide Pakistan, joint development. But what surprised me is कि इनका आर्मर ही नहीं है कहीं. यूक्रेन का टैंक्स ही नहीं दिखे कहीं पे, या कहाँ पे रखे हैं, सिटीज में रखे हैं, किधर रखे हैं, no clue. So there are lot many things that you will come across, and many other things like urban warfare, building to building fighting होने वाली है. And it's going to get ugly if by the day. बहुत ही गंदी फाइटिंग होगी, हैंड टू हैंड कॉम्बैट तक भी होगा. एंड सबसे लीथल, जिन लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में, चेचन लीडर है कैदिरोव. ठीक है, रमजान कैदिरोव. सो हिज फादर वाज द प्राइम मिनिस्टर इन 2003. He came to power in Chechnya after negotiations. 2004, Ramzan Kadyrov's father was assassinated. ठीक है, Adnan Kadyrov. So after his father's assassination, he was that time leading the Chechen offensive against Russia. So once the hardliners assassinated his father during a military parade, he vanished from there and he landed up coming to Russia to seek Putin's help. Putin guaranteed him that I'll give you the money, I will fund you. You do one thing, you fight and liberate Chechnya from those people who have murdered your father. So it was actually Vladimir Putin who controlled Chechnya. That is how the war with Chechnya came to an end. And these are the most lethal fighters. ये सबसे ruthless हैं. They don't take prisoners. They simply eliminate. ठीक है. So these are the Kadyrov forces, the elite forces. And ये जितना भी रशिया की स्पेशल फोर्सेस, स्पेटनाज वगैरह है, ये सारे बंदे, they are in that, actively participating. And they are not very much in number, but जितने भी हैं, they are in 20-30,000 troops, strong troops of Chechnya. And Chechnya had given a very tough battle, for Russia to fight. When they entered Grozny. Grozny is the capital of Chechnya. तो अंदर तो घुस गए, अभिमन्यु का चक्रव्यूह. Once they were in,
they got stuck in the fighting because इतने कट्टर थे that they were 99% fidain. कि बिल्डिंग से भी if they would fire, they would not leave the building. वो अंदर मारते मारते ही मर जाते थे. So the kind of casualties that the Russian forces took in Chechnya was no person's business. I mean, it shattered their economy. It spread more terrorism. It spread more psychological fear. And because of the Chechnya conflict for so many years, Russia actually lost out on a lot of development during these many years. So, you know, Russia is a country which will never be flexible, which will, yeah, nobody spends billions of dollars to enter a country to just walk back. So basically, negotiations were just a last nail in the coffin that, okay, time, either you give up or you, just surrender. Let us walk in. And Russia is going to come in. They are going to install their puppet government, their known person, and more people from Luhansk and Donetsk are going to enter and occupy these places in Kiev. Kiev हो गया, Odessa हो गया, ठीक है, Mykolaiv हो गया. So these important cities are all going to be occupied by pro-Russian people now. And they are Russia is going to install S-500. तो जैसे सीरिया में no fly zone था, यहाँ पे भी no fly zone होगा. And Belarus is as it is pro-Russia. So Europe is already in a fix. I mean, probably, yes, we can say this is the start of World War III in a way, yes. ओके सर, एक फाइनल क्वेश्चन है, उसके बाद वी विल वाइंड अप द सेशन. मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसे रशियन प्रेसिडेंट पुतिन है, व्लादिमीर पुतिन, मतलब उनको एक स्ट्रांग लीडर की तरह देखा जा रहा है कि यार ये बंदा तो मतलब इसके देश पे कोई आंख उठा के देखेगा तो ये तो उड़ा देगा सबको. मतलब व्हाट दीज पीपल लाइक दीज किड्स जो एस्पिरेंट्स हैं हमारे, व्लादिमीर पुतिन की कुछ ऐसी क्वालिटीज मतलब जो आपने नोटिस करी हो? मैं तो देख रहा हूँ ही इज अ वेरी स्ट्रांग मैन, व्हाट आई कैन परसीव, स्ट्रॉन्ग कन्विक्टेड मैन जो देश के लिए कुछ भी कर देगा. क्या इम्बाइब करना चाहिए? He's a serious person. He respects all, but he also expects respect to be given back in the same manner. So basically, he does not take shit. Sorry for my language, but that is the most easiest way how you can recall कि भाई Major Samar ने क्या बोला था. So and Putin, he means what he says. He doesn't talk for the heck of it. He doesn't need popularity. He doesn't need dependency on something. He's a self-made man altogether. Yeah. He's the president, you know, in today's times, who's a black belt, who's a firer, ex-KGB agent. So he's a package. He's an all-rounder, you know, politician and a leader for the Russians. And had he been unfair and unjust, I believe all of Russia would have opposed him, you know. So my respect for him is definitely been quite a lot. And, you know, as far as Ukrainians are concerned, they have actually been lured into the trap of the Western countries. You know, it's become a scapegoat. It fell prey to their promises that you come join NATO, and you know, so it's been. I feel sad in a way for Ukraine that they got very much carried away with the assurances by the West. But you know, it is at fault because see, if you are going to go to war with the country, then you got to be self-reliant also. You cannot be dependent on a country and take pangas also with another country. So you can't be the aggressor and at the same time you are not having much of weapons or anything to fight the war with. And you know, over the past 8-9 years, you know, since the annexation of Donetsk and Luhansk, there have been a lot of very brutal murders of these Russian citizens in Donetsk and Luhansk. You know, very selective abductions and killings and murders have been carried out by
the pro-neo-Nazi Ukrainians. They picked up Russian soldiers and literally crucified them to the cross, burned them alive onto the cross, and shot them and cut them into pieces. That is like how barbaric they are. So things are not very stable in Ukraine, I would say. As far as the social infrastructure is concerned, there is a movie I want you all to watch. The movie's name is Whistleblower. It's a movie based on a UN operative, and the highest amount of sex slave and human trafficking that takes place is in Ukraine. So, you know, the whistleblower, watch the movie, you will get to know how Ukraine is being manipulated, how Ukraine is being used for all the wrong means and wrong businesses. And Ukraine has newly been formed. So that element of patriotism and, fighting for your country and giving up everything for your country, that is very limited, in numbers. So, nations are not made in a day. They take time. Yes, sir. And the most vulnerable period for a nation is when it is new, when it is newly created. So you got to be careful, in the earlier years of a nation into the existence. You got to actually shape it up by putting in the right policies and following the right direction and path. Exactly, sir. तो काफी सारी वैल्यूएबल इनसाइट्स सर ने शेयर करी. I want to just clarify to all the students, India is not going to war till a particular country comes and fingers India. यहाँ पे, please, I'm telling the youth, do not wish for war. I've seen it. It's not good. It'll be your worst nightmare, living nightmare. Right now, when you feel hungry, you get food. You feel thirsty, you get water. You get bored, you want to go party, you go to any place of your wish and will. At times, you even might take liberties with your parents' guidelines and rules, and you might say, okay, I'm doing a night stay, I will come tomorrow. Okay, and your parents are giving you pocket money and you got jobs, you have a proper schedule in life. Okay, everything is sorted in life. But imagine if you go to war. You really think that very next moment your office is going to be open? You really think somebody is going to keep paying you the salary despite business being shut? And once war begins, you really think food and rations and supplies will be readily available at every place? And for that, at the end of the day, you need money only. So have you started a habit of saving? During war, prices go up. Hoarding and black marketing begins. So, you got to be, what I would say is Indians have not seen a prominent war after 71. Kargil was restricted only till Kargil. But a full-fledged war was 71. You ask the people in Punjab, you ask the people towards Gujarat and Bombay side when these air raid sirens used to be on. The Pakistani aircrafts, maximum they could come up to is the Ambala, but they never were able to go back. So वो अलग बात है that if somebody tries to finger us, we have the will to fight, and we are very patriotic. So it is next to impossible for any country to come and take over our land. It's not like how it used to be earlier. Okay, here if 200 soldiers are coming to attack us of our enemy, you have to, with the press of a button, you'll wipe out more than 200. Yeah? One missile will do it. So it's a hybrid warfare. It involves communication. It involves technology. It involves the latest of nanotechnology, microtechnology. Okay? So it involves a lot of innovation and new design. So it's a total new challenge, new warfare. Ukrainians are outnumbered, but still they are able to push back and hold back the Russian forces at many places.
Why? Only because they have the drone that they purchased from Turkey, the Bayraktar TB2 drone. So that is the saving grace, I would say. Otherwise, I don't think these countries in Europe are so populated that in today's times they can even go to war. They wouldn't even have that much of youth to fight. So we being the second most populated country, trust me, we are going to come up as a world leader by keeping neutral, number one. By keeping neutral and promoting peace and negotiations will give a mindset that yes, we are a neutral country. Why are we respected? Why is it that the Ukrainians and Russians, both the sides are not firing and killing our students or not getting any harm to them? Because we are in good terms with both the countries. We are balanced. We respect all. And we maintain a distance also with all. Appropriate distance. We are a country which will never go into trade or debt. That we have to, actually request that please let go of our debt. That embarrassment and all that is not there. We are self-reliant. We are self-dependent. We are independent. And it is a sufficient message to give to the other countries. If they are having any funny ideas, they will not be able to manage what you are possibly thinking. So ladai to hogi nahi. If war is imposed, just too bad. I will not be here. I will be at the front with my Paltan ready to fight and kill the enemy which is putting a threat onto us. So things are not that easy as they sound or as easy it is to speak. It's not that easy. And there are misinformation warfare itna zyada hai कि they're saying Russian troops were told it is an exercise to move into Ukraine, how to mobilize into Ukraine. So I really do not know whether that is a true fact or not. But I do not think any army would keep their own troops in the dark when they know they are going to send them into a life-threatening situation. So I believe logically and practically that Ukraine is doing everything it can to curb and stop the negative outlook of Ukraine and put in a positive outlook. And Russia is maintaining its stand that enough of violence. 14,000 people have died since 2013, despite a peaceful referendum. So it is not a man enough act that you come to an agreement and then you start fighting and killing as well. Two things will not go hand in hand. And the people have decided and taken a call. And referendums are not that the country is putting a pistol on somebody's head and saying vote. People came out on their own and as volunteers, they themselves voted where they wanted to be. Exactly, sir. तो सर थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. बच्चों को आइडिया ही नहीं होता था कि मतलब एक मैच्योर आउटलुक से कैसे इस करंट इशू को देखा जाए. एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प देम. ये जो अभी जिनका एसएसबी है और जिनके एग्जाम्स है, तो कहीं ना कहीं उनको एक अप्रोच मिली होगी कि क्या सिनेरियो चल रहा है. India will be better off in staying neutral and follow the non-alignment movement, because I'll tell you one very practical aspect. Our weapon systems are totally dependent on Russia. Exactly. And overnight, do you expect us to leave a loyal friend who had sent its navy in 1971 to block the American forces from attacking India? I don't think so. So I think a friend in need is a friend indeed. Yes, sir. And I know within hearts of hearts we are with Russia, no doubts about it. But as a democratic country, yes, no country has the right to impose war or occupy anyone's sovereign land. And so we would request Russia to stop the offensive. And we would also logically tell Ukraine to not join NATO so that peace prevails in the region. And there is no threat to Russia from the NATO forces, indirectly from US. Because 99% of the
formation funding of NATO comes from US. Exactly, sir. तो आई विल वाइंड अप द सेशन यहीं पे. थैंक यू सो मच सर इतनी सारी इंफॉर्मेशन हमें देने के लिए, एंड दैट वाज डेफिनेटली एन आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ अस. तो बच्चों आज हमारे साथ थे फिर से मेजर समर तूर सर. समर तूर सर हैज बीन अ बिग ब्रदर ऑलवेज. कभी भी सर को कॉल करो, सर इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर अस फॉर द स्टूडेंट्स. एंड आई होप कि आपको सेशन बहुत इंसाइटफुल लगा होगा. फिर किसी लाइव सेशन में मिलेंगे सर के साथ. जय हिंद सर, एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू. Jai Hind to all the viewers and Shivam, and be safe and all the best. Jai Hind. थैंक यू सो मच सर. जय हिंद सर.